Hello everyone, welcome back to my channel. I'm live now, so today I will be doing a giveaway announcement of the Edge Router X. As you can see here, this is the Edge Router X. You can see here, which is a 5-port router. So I will be doing a giveaway for that. So let's wait how many of you join. I will check here. Am I live now here? Hello, hello. Check here. Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's live I am going to give away this Edge Router X. So as you can see here, so I'll be announcing the giveaway winner of this Edge Router X. So let's see. Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's live I am going to give away. So am I audible? Let me know in the comments. Can you hear me properly? And in today's live session, also we will talk about some UniFi gateways and all other stuffs like what are new devices launched in the Ubiquiti. We will talk about that, and so let's everyone join the session. So we will start running the giveaway. So let me share this, share this. Give me a second please. Let everyone join the stream, then we will start running this announcement for the giveaway. In the meantime, let me check something here under the sources.
Okay, so let me announce giveaway for the Edge Router X. As you know, the last week I have done. It's been. Let me check the video. So I did a video 7 days ago, and on the Ubiquiti Edge router X giveaway 2K subscriber giveaway announcement. So Hardik Kumar Sinha said hello, hi everyone. So I'm going to announce in this video. See, and I'm using comment picker. I'm not sure what else should I try. So मैं comment picker use कर रहा हूँ. इसमें मैंने वीडियो का URL डाल दिया है and I've said number of winners as one and including following word I have kept as blank because most of you have commented without that following words like the giveaway. So I'm just going to submit it here and see reCAPTCHA invalid form, reCAPTCHA validation failed. Not sure what is that mean. Please wait 8 out of 14 comments. So congratulations, following are the winner GOM Pi 71 whose comment has been picked up here. I'm using the log Wi-Fi router from my provider and looking for a more professional device, so I would be very happy to experiment with the Edge Router X. So I will just screenshot this user who has replied on that video. So whoever this user is, you can reach out to my email address and share me the details. I will send you this Edge Router X and one power adapter to power this Edge Router X. So let me put that in the chat also. Okay. @GOMPIE 71. He is the winner of giveaway. So this user, you should reach out to my email address. Is it on my YouTube channel description? So I will give you those devices, the which is Edge Router X. So now let's talk about the UniFi networks. So as you have seen in the last week, we have seen about my UniFi network, what UniFi devices I have used. So there are some gateways router I have in my desk also, as you can see here. This is the UniFi Express, and this is a MikroTik router board, and this one is the UCG Ultra, as you can see here. So UCG Ultra, in India, this is very compact devices, and the use case of these devices, mostly if you have a 1 gig of line internet connections line, you will get full up to speed here. So इसमें आपको 2.5 GB का WAN पोर्ट मिलता है और बाकी LAN पोर्ट 1 gig के हैं, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन
काफ़ी रिलायबल हो जाएगा, और you will be in the ecosystem of UniFi. So the ecosystem of the UniFi, there are perks of the UniFi ecosystem, like for example, जहाँ अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यूनिफाई साइट मैनेजर. सो आप सारे साइट को इजीली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं. और सबसे बड़ा मतलब you will say that advantages, like the pros of Unify ecosystem, आप साइट मैजिक एस डी वैन मैनेज कर सकते हैं डायरेक्टली. उसमें आपको एक ही सिंगल साइट में पब्लिक आईपी होना चाहिए, और बाकी सारे साइट को जो जो साइट के आप ओनर हैं, सुपर एडमिन हैं, आप इजीली साइट टू साइट वीपीएन क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल. सो ये सारे प्रोज हैं. यूनिफाई यूसीजी अल्ट्रा के बारे में बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन एंड एवरीथिंग अबाउट दिस यूनिफाई यूसीजी अल्ट्रा. आई थिंक यूनिफाई यूसीजी अल्ट्रा इंडिया स्टोर्स में भी अवेलेबल है अभी, लेकिन फ़िलहाल में ये सोल्ड आउट है. इसकी प्राइस अराउंड 10,547 in exclusive of GST. Inclusive of GST, price is 12,445. So if you take a look closely into this gateway ultra, it has 2.5 gbp of LAN port, and all 4 port are 1 gbps LAN port, as you can see here. So the thing is, like with using IPS IDS, like intrusion prevention system and the detection system, you will get 1 gbps of full routing. So this router has like if you have even 2.5 GB offline, you will get up to speed. But if you using DPI, deep packet inspection, traffic analysis, and the uh, intrusion prevention, like the security threat management, you will get up to 1 Gbps routing of speed. And the best thing is, like this look very slick, and at the front you see 1.3-inch screen of LCM screen, so where you can see the client counts what's the speed of the your internet network. And at the back side you will see the reset button also. This is how it looks, and this is how you can manage. So it's very easy. Unify की device काफ़ी simple. I mean, out of the box you can easily manage without any issues. I mean बेसिकली काफ़ी ईजी होता है. आपको प्लग इन प्ले, और आप अपने यूनिफाई नेटवर्क ऑन योर फोन आप इजीली डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं. क्योंकि ये सारी यूनिफाई यूबिक्विटी डिवाइस के अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, तो ब्लूटूथ के सपोर्ट के थ्रू डिवाइस इजीली डिस्कवर होता है विद द डिस्कवरी पोर्ट ऑफ UDP 1001 पोर्ट. तो वो आपके यूनिफाई नेटवर्क में डिस्कवर हो जाता है. ईजिली आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, एंड यू कैन बी द ओनर. सो ये एक सिंपल एग्जांपल सेटअप दिया है. क्लाउड गेटवे अल्ट्रा के बाद एक इन्होंने यूनिफाई स्विच लगाया है और एक्सेस पॉइंट. तो ये एक सिंपल एक टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी. आप अपने यूज़ केस में यहाँ पे कोई दूसरी यूनिफाई स्विच यूज़ कर सकते हैं. ये तो डेस्क माउंटेड है, कॉम्पैक्ट स्विच है, और इजीली मैनेज कर सकते हैं. और ये इसका स्पेसिफिकेशन है. सो विल टॉक अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हियर. सो यू कैन सी हियर it says you can manage up to 30 plus unified devices. So UCG Ultra रन करता है सारे यूनिफाई, सारे नहीं, ऑलमोस्ट it just run unify network application, not all applications. So unify network application it runs, and it up to 30 plus unified devices. So unified devices means unify access point, switches, and I will show here. This is the cloud key. So here you can see the count. It has 4 switch, 4 APs. So cloud gateway ultra
30+ यूनिफाई डिवाइसेस मैनेज करता है, और साइमल्टेनियसली इसमें कितने यूज़र्स कनेक्ट हो सकते हैं? ऑलमोस्ट 300+ यूज़र्स साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम वैन पोर्ट 4 है, डिफ़ॉल्ट वैन पोर्ट 1 है। तो ये पोर्ट रीमैपेबल है। अभी यूनिफाई के न्यू अपडेट्स में हम मल्टीपल वैन पोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू। आप जैसे यहाँ सेटिंग्स में इंटरनेट में जाके आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं कितने वैन आपको सेट करना है। तो बेसिकली मेरे केस में मेरे पास यू एक्स जी प्रो है, जिसमें सिर्फ 4 ही पोर्ट अवेलेबल है। इसमें एक लैन है, बाकी 3 वैन। तो आप फेलोवर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें पोर्ट रीमैपेबल है। 4 पोर्ट है जो जीबी के 1 GB के RJ45 पोर्ट है, और एक पोर्ट 2.5 GB का वैन पोर्ट है। और इसमें आपको IPS IDS का थ्रूपुट मिलता है 1 Gbps, और ये कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप फॉर्म फैक्टर है। और वेट भी काफ़ी लाइट है, एज यू कैन चेक हियर। इट इज़ नॉट मेंशन द वेट हियर, बट या वेट मेंशन किया है 520 ग्राम का, तो काफ़ी लाइट है। आप डेस्कटॉप पे इसको रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। इजीली आप मैनेज हो जाएगा। तो in my case, let me show you what is IPS IDS I'm talking about. So basically IPS and IDS is a open source of intrusion prevention and detection. So by default UniFi के अंदर firewall के अंदर ये इनबिल्ड है, एज इन गेटवे भी काम करता है, और ये फायरवॉल। तो आपका ये प्रोटेक्शन भी करेगा आपके नेटवर्क को, और न्यू न्यू एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल रूल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं, रीजन ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका UCG अल्ट्रा सारी चीज़ सपोर्ट करता है। तो बेसिकली आप रीजन ब्लॉकिंग कर सकते हैं, जियो ब्लॉकिंग विच इज़ रीजन ब्लॉकिंग, बोथ आर द सेम। और इसमें आप फायरवॉल रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, नैट का ऑप्शन है, DNS का फीचर्स है, टाइप ए सी नेम। अभी टाइप ए का फीचर्स अभी आया नहीं है, बट आगे कुछ अपडेट्स में टाइप ए का भी फीचर्स आ जाएगा। तो बेसिकली जब आप ये पॉलिसी इंजन के अंदर जाते हैं, यहाँ आपको ये सारे ऑप्शंस UCG अल्ट्रा में भी मिल जाएंगे। फायरवॉल, पॉलिसी बेस राउट, QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस, जहाँ पे आप वॉइप और डेटा के ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जैसे आप जूम नेटवर्क पे हैं, आपका कोई PBX सिस्टम है वॉइप बेस, तो उसकी ट्रैफिक को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि फॉर ए जूम मीटिंग और माइक्रोसॉफ्ट टीम or any desk, you can prioritize ki for this moment Google Meet, this much traffic I have to prioritize. So for during that moment, that the traffic will be dedicated for that QoS. उसके बाद आप पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, स्टैटिक राउट का ऑप्शन है, OSPF, BGP, और ये DNS का ऑप्शन भी है। तो DNS के ऑप्शन में आप यहाँ चेक कर सकते हैं होस्ट ए 4 times A एंड सी नेम का ऑप्शन सपोर्ट इज कमिंग सून। बाकी ये सब ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। इवन इट सपोर्ट नैटिंग ऑल्सो, सो हियर यू कैन क्रिएट योर नैट रूल्स। इट इज सोर्स नैट, डेस्टिनेशन नैट। सो which traffic interface tunnel you want to use for NAT, you can set either on the masquerade, source NAT, destination NAT, you can set. Even it also support access list. सो एक्सेस लिस्ट के अंदर एक कैच है, इसमें आपको यूनिफाई स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ अ लेयर 3 स्विच। तो इसमें आप एक रूल्स क्रिएट कर सकते हैं विद अ डिवाइस बेस एक्सेस लिस्ट ब्लॉक कर सकते हैं आप, काफ़ी VLAN को अलाउ कर सकते हैं। तो एक्सेस लिस्ट का भी ऑप्शन है यूनिफाई। तो ये ओवरऑल दिस डिवाइस इज़ बेस्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कॉम्पैक्ट डेस्कटॉप माउंटेड गेटवे एंड फायरवॉल। ये UDM प्रो की तरह ऑल इन वन डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ राउटर गेटवे है, और इसके अंदर आप यूनिफाई नेटवर्क मैनेज कर सकते हैं। पर UDM के अंदर एक फीचर्स है, UDM में आप यूनिफाई नेटवर्क सर्वेलेंस, यूनिफाई प्रोटेक्ट सर्वेलेंस भी मैनेज कर सकते हैं, तो एक प्लस पॉइंट है। बट ऑलमोस्ट एट एवरी होम लैब
सबके पास रैक नहीं होता है, दे हैव, यू कैन इजीली put these UCG Ultra on a desktop, like right now I have on my desktop. So you can easily simply manage, and you can check the size of this, the form factor. It is not a fully 19U rack mounted like the Dream Machine Pro, but it has the capability and the features you can get with the higher end gateways. So IPS IDS का थ्रूपुट इसमें आपको 1 Gbps का मिल जाता है, अब एट फुल स्पीड पे आप रन करते हैं। तो इनके जैसे अब हम कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल store.ui.com. If you guys have any questions, you can comment down and let me know. So let me check the United stores, US stores. सो इन केस यहाँ से अभी एडवांस होस्टिंग में जाके हम, मैं आपको गेटवे प्रो का स्पेक्स दिखाता हूँ। ये है गेटवे प्रो जो अभी मेरे नेटवर्क रैक में लगा हुआ है, विच इज़ यूनिफाई गेटवे। तो आप चेक कर सकते हैं, इसका 4 पोर्ट है, उसमें 2 SFP प्लस एंड 2 लैन पोर्ट है। तो इसमें मैंने 3 पोर्ट को एज ए वैन बनाया है, वैन 1 फेल ओवर, वैन 2 एंड वैन 3 फेल ओवर, और एक पोर्ट लैन एज एन SFP प्लस यूज़ कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इसकी भी स्पेसिफिकेशन आप चेक करेंगे तो इसमें आपको IPS एंड IDS का थ्रूपुट मिल जाता है, प्लस इसमें स्पीड थोड़ी IPS एंड IDS की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द UCG अल्ट्रा, बिकॉज ये फुल फ्लेज गेटवे राउटर है और 1U रैक माउंटेड साइज़ है। और इवन आप इसका डिप्लॉयमेंट स्केल भी चेक कर सकते हैं। आप ये लार्ज स्केल नेटवर्क के लिए है, आप स्केल कर सकते हैं। गेटवे प्रो यूनिफाई स्विच देखिए आप यहाँ पे क्लाउड की के थ्रू कैमरास, नेटवर्क, एक्सेस पॉइंट, एवरीथिंग यू कैन मैनेज। और even Cloud Gateway Ultra as well as UXG Pro both support a cyber secure. I mean, you get a cyber secure extra thread signatures. So you have to pay a monthly, yearly for that each site. So right now on my side also I'm using a cyber secure. I can show here. So right now you can check the signatures, total amount of signatures here, which is 65,539. So under the inside you can check under the activity and the geo hotspot. So to show you the better view of the cyber secure, you will get that in a Dream Machine Pro. Let me, I got one comment. Sir, UNAS Pro करप्ट हो सकता है अगर सडन पावर लॉस होता है ड्यूरिंग राइट्स। बेसिकली यस, यूनास प्रो और इवन यूनिफाई के जितने गेटवेज हैं ये भी सडन पावर लॉस की वजह से ख़राब हो सकते हैं। लेकिन यूनास प्रो UNVR जो ड्राइव्स रन कर रहे हैं, सो बेसिकली ये एंटरप्राइज डिवाइस हैं और रैक माउंटेड हैं, तो इसके लिए UPS प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। मेरे केस में भी मैं UPS रन कर रहा हूँ। और अभी यूनास प्रो पे नट का ऑप्शन आया नहीं है, UPS नट का ऑप्शन आया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर शायद ये अपडेट में आ जाए। जैसे अभी स्क्रीन पे आप ये मेरा यूनास देख रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट मैं 3 ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ, उसमें से 2 ड्राइव का यूज़ मुझे मिला है विच रेट 5, एज यू कैन, आई विल शो हियर। इफ़ यू check in the manage storage, you can check here. I'm using basic protection RAID 5. I'm getting up to 16 TB of useful storage and 1 8 TB is my protection. So UNAS Pro करप्ट हो सकता है अगर हम उसको प्रॉपर UPS का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी आती जाती है तो मोस्टली इन रूरल इंडियन एरिया में
ये पॉसिबल इवन इन मुंबई ऑल्सो, जहाँ मैं हूँ। यहाँ पे एक केस हुआ था मेरे साथ। मेरे पास यूनिफाई 24 पीओई की स्विच थी। वो ऐसी सडन इलेक्ट्रिसिटी गई, फिर वापस से इलेक्ट्रिसिटी आई, उतने में उसका अंदर का पावर सप्लाई यूनिट ख़राब हो गया था। तो वो होपफुली वो डिवाइस मेरा अंडर आरएमए कवर हो गया, क्योंकि विद इन इट वॉज जस्ट हार्डली लाइक 3 मंथ आई वॉज यूजिंग दैट USW24। सो ये है USW24 पीओई स्विच, जो जिसका PSU उड़ गया था। तो सारी यूनिफाइड डिवाइसेस का आपने एक चीज़ देखा होगा, जितनी भी रैक माउंटेड यूनिफाइड डिवाइस हैं उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा, ऑन द बैक ये आपको एक ऑप्शन दिया रहता है, ये DC पावर बैकअप। सो बेसिकली ये आरपीएस से कनेक्टेड था, रिडंडेंट पावर सप्लाई। यूबिक्विटी एक पावर सप्लाई सेल करती है अपने चैनल पे। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे अंडर द इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपको एक पावर बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। सो ये पावर बैक बेसिकली एक डीसी पावर अप्लाई करता है इंटरनल पीएसयू। जितनी भी यूबिक्विटी की रैक माउंटेड डिवाइसेस लाइक यूडीएम प्रो, यूएनवीआर प्रो, सबके अंदर ये आरपीएस का डीसी पावर का ऑप्शन रहता है। तो बेसिकली ये एक प्रोप्राइटरी इनका एक केबल है, उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। सो बेसिकली इट ये यूपीएस नहीं है, प्लस एक ये रिडंडेंट पावर सप्लाई देता है। जब आपका ये इंटरनल सीपीयू आपके राउटर का अगर फेल हो जाए, तो ये उस जगह में वर्क करता है। तो बेसिकली एपिक एक्स का जो क्वेश्चन था, यूनास प्रो करप्ट हो सकता है? यस, करप्ट हो सकता है अगर पावर लॉस होता है। So let's come back to the UDM Dream Machine Pro, where I was showing about the cyber secure. So basically cyber secure by proof point एक add-on features Ubiquiti ने रिलीज किया था, जो पर साइट आपको $99 फॉर ईयर आपको परचेज करना होगा, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा सिग्नेचर्स मिलेगी। तो लेट मी शो यू द नॉलेज बेस्ड गाइड। सो वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो यूनिफाई साइबर सिक्योर, थैंक यू सर, वेलकम एपिक एक्स। सो ये है यूनिफाई साइबर सिक्योर बाय प्रूफ पॉइंट। सो बेसिकली साइबर सिक्योर इज अ सर्विस दैट सिग्निफिकेंटली एनहांस यूनिफाई इंट्रूजन एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम विच इज़ आईपीएस एंड आईडीएस, हमने अभी देखा। तो ये एक प्रूफ पॉइंट एक कंपनी है, और यूबिक्विटी यूनिफाई उनकी सर्विस लेके एक एक एक्स्ट्रा सिग्नेचर एनहांस प्रोटेक्शन का एक एड ऑन्स फीचर्स इनके यूनिफाई गेटवेज में ऐड किया है। तो ये बेसिकली आप कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं? आप ओनर, अगर आप साइट के ओनर रहेंगे, मतलब you are the owner of the cloud gateway ultra, you can go ahead and purchase it from the site manager. So let me show you that also. uh, Under the site manager, जब आप site manager जाएंगे, और if you are an owner, so you will see this icon. So right now this is one of my client website, I am not the owner. So right now you see this icon, it says the owner of this sites can activate cyber secure. So right now I've activated on one of my two of my sites, one on Dream Machine and one on the UXG Pro cyber secure. So basically यू शुड बी द ओनर। और ये अभी गाइड अपडेट नहीं हुए, अभी इंडिया में भी अवेलेबल हो गया, तो इंडियन कार्ड्स भी लग जाते हैं, आइदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, टू परचेज द साइबर सिक्योर सब्सक्रिप्शन। सो सपोर्टेड मॉडल एंड गेटवेज आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये मॉडल EFG जो इनका हाई एंड एंटरप्राइज फोर्ट्रेस गेटवे है, 95,000 प्लस सिग्नेचर सपोर्ट करता है, और 53 कैटेगरीज है उसमें। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है थ्रेट डिटेक्शन वाली में, जैसे डीडॉस, बॉटनेट और मलिशियस मालवेयर, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में शो करूँगा। और UXG एंटरप्राइज उनका एक गेटवे, उसमें भी 95,000 प्लस सपोर्ट करता है। और उसके बाद मतलब मिड जो उनके प्रो सीरीज़ के जितने भी राउटर गेटवेज हैं, यूडीएम प्रो मैक्स,
तो आप चेक कर सकते हैं 55,000 और 53। UDMSC में भी सेम है, और इवन मेरे पास UDM प्रो है और UXD प्रो, उसमें भी सेम ही है। 55,000 प्लस आपको सिग्नेचर मेमोरी ऑप्टिमाइज मोड मिल जाता है। तो सब्सक्रिप्शन आप कहाँ से कर सकते हैं वो आपको पता है, unify.ui.com साइट मैनेजर से आप कर सकते हैं। यू शुड बी द ओनर। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपका साइबर सिक्योर के अंदर वो अपडेट होता है, और आपको यहाँ पे एक आइकन दिख जाएगा साइबर सिक्योर एक्टिव, और यहाँ से आप ट्रैफिक फ्लोस चेक कर सकते हैं, क्या क्या ट्रैफिक्स आ रही है जा रही है। अभी टोटल सिग्नेचर उसने एज ऑफ नाउ स्कैन किया है 65,539। सो आप यहाँ से ट्रैफिक फ्लोस चेक कर सकते हैं कि कौन सा ट्रैफिक फ्लोज और आपके हर सारे नेटवर्क में। सो ये फॉर एग्जांपल ये गैलेक्सी A16 का डिवाइस स्कैन हो रहा था मेरे मेन नेटवर्क से, तो ये यहाँ पे इसने आईपीएस और इसने डिटेक्ट किया है। यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ ट्रैफिक का इन्फो, कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या ड्यूरेशन, क्या पैकेट्स है, और सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। तो ये एक रीजन ब्लॉकिंग थी, तो यहाँ से मैं इसको कनेक्शन को ब्लॉक कर सकता हूँ, डेस्टिनेशन डोमेन को ब्लॉक कर सकता हूँ। तो इट्स आपके अंडर में सारा कंट्रोल है, आप सारी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और ओवरव्यू के अंदर ये पूरा एक चार्ट दिखता है आपको, एक जोग्राफिकल मैप दिखता है, जिसमें आप सारी समरी चेक कर सकते हैं, फ्लो समरी, जैसे टोटल कितने ट्रैफिक फ्लो काउंट हुआ है 1,32,554, और उसमें से कितने सस्पिशियस मतलब लो सस्पिशियस है, मतलब आप रिस्क चेक कर सकते हैं, जैसे रिस्क रिस्क फैक्टर लो, सस्पिशियस एंड कंसर्निंग। तो लो का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है 1,32,000, विच इज़ I mean, most of the traffic are showing that only, and suspicious and concerning are 0 0। और ये टॉप डेस्टिनेशन है, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी कितनी टॉप डेस्टिनेशन है, DNS.Google और गेटवे। और ये टॉप क्लाइंट से आपके ये जो लोकल नेटवर्क में यूडीएम प्रो के नेटवर्क्स में कनेक्टेड है, तो ये सारे क्लाइंट्स का काउंट और सारे ऐप जितने हैं ये सारे काउंट हमको दिख जाएंगे। इवन यू कैन होवर योर माउस हियर एंड चेक व्हाट्स द ट्रैफिक फ्लो। सो एक ग्राफिकली इजीली अच्छा लगता है, मतलब इजीली मैनेज करने के लिए। और यहाँ पे फ्लोज की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे सारी ऐप क्लाइंट की एक्टिविटी चेक कर सकते हैं रेंज के हिसाब से, फॉर 1 डे, फॉर 1 आवर, फॉर 30 मिनट। सो काफ़ी यूज़फुल है यूआई। सो ये नेटवर्क में जैसे ड्रीम मशीन प्रो में एक मेरा यूनिफाई स्विच चल रहा है, और 3 एक्सेस पॉइंट और 2 यूनिफाई के कैमरास। सो ऑल यूनिफाई डिवाइसेस मैनेज हो रही है। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी ऑन द चैट। सो हम चेक कर रहे थे यूनिफाई क्लाउड गेटवे अल्ट्रा। सो क्लाउड गेटवे अल्ट्रा आपने देखा कि ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। इवन द यूनिफाई साइबर सिक्योर में अगर आप ये सेक्शन चेक करेंगे, इट सपोर्ट सेम 55,000 प्लस signature, which is memory optimized mode and categories also. So this is very, I mean, if you are new to the ubiquity, and as of now, I mean, everyone looking for the new devices from the ubiquity, but in India those unified devices is not yet launched and announced. If you check the ubiquity India stores, there is nothing mentioned here, it's all old gateways. But if you take a look into the uh, ubiquity US stores, you will see all new gateways. So as of now, everyone is looking for this cloud gateway fiber. I mean, everyone wants this. Even in the US is also everyone taking a look. The best thing of this cloud gateway fiber, as you can see, it looks like a cloud gateway ultra, but there is a size difference, the dimension difference you will see. The best thing is इसमें आपको फाइबर अपलिंक मिल जाता है 10 गिग का, वो भी तो मोस्टली एट एज ऑफ नाउ होम लैब हो गया, अगर नेटवर्क एंथुसियास है,
फ्रीलांसर है, वो चाहता है कि फॉर फ्यूचर रेडी वो 10G का अपलिंक यूज़ करे. बट इन इंडिया 2.5G is more than enough. But if you get these one at reasonable price in India, but I'm not sure in India it's available. You have to purchase it from the US or from some of the website. You can purchase and you have to pay for the custom duties and taxes. So the features of this cloud gateway fiber, इसमें आपको 10G का दो SFP प्लस पोर्ट मिल जाता है, और इवन एक 10G का RJ45 का वैन पोर्ट मिल जाता है, और बाकी के जो चार पोर्ट हैं आपके 2.5G इवन PoE प्लस है. तो मतलब ये स्विच का भी काम करता है, और प्लस एक गेटवे फायरवॉल है. तो ये वर्थ है डिवाइस अगर आप लेना चाहते हैं अभी यूबिक्विटी की. अगर नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो विथ cloud gateway. To just start with the ubiquity and try to check the ubiquity UI. There are lots of new features, but if you can get easily these devices, it will be very useful. So you can check the diagram here. You can manage the UniFi Protect cameras also and the access point. So as of now, I would say if you are looking into the ubiquity right now, you can just go with Cloud Gateway Ultra if you can. Otherwise, there is also one UniFi Express. Even this is a small form factor devices which has only 1 gig of WAN and 1 gig of LAN. So it's a small form factor devices for small offices where you just need a router as well as a Wi-Fi also, because the best thing is in the UniFi Express you get a Wi-Fi 6 also, so you can get a router feature as well as a Wi-Fi feature, so all in one devices. So I've announced a giveaway winner also, and we have talk about the unified devices also in this live session. If you guys have any questions, you can ask me. So after that, I will end this live session. So I think from the next time I will be announcing the live session. Today I have announced. I mean on the post, I've just if you check here my post here, I think I did 2 hours ago. I have posted for the giveaway, and I was waiting for the Trex Media for the Roshan to join. Is Roshan joined the live or not? So I think I will announce in weekly. I think if I'm going to do a live session, I will try to announce it a weekly, so most of you can join this live session. You can't miss that. We will talk about all the networking stuff and everything. And let me talk you about one more thing. Only thing I'm as of now I'm getting in issues is with my UniFi switches and the rack mount where I have all my Ubiquiti devices. So let me show you one thing. ये है UniFi Enterprise 8 PoE switch. So basically ये यूनिफाई स्विच का टेम्परेचर लेवल काफ़ी हाई होता जा रहा है. इट्स 76 डिग्री सेल्सियस एंड सम टाइम it goes up to 80 degrees Celsius, so which is getting quite hot. And even my UXG Pro has fan. UXG Pro is also getting hot, so I'm looking for some fans like exhaust fan which exhaust the hot air from my I mean the rack to outside. So let me show you once more my rack, so you will be able to understand what I'm talking about.
So here you can see, let me change the quality, high quality. So right now if you check here, I have removed this side panel also, and all the devices are mounted one by one and like a clean manner, as you can see here. But somehow these USW Enterprise 8 PoE and these all gateways are getting quite hot, and even I'm using all fans, but still I'm getting lot of humidity as well as the temperature. I will show you right now what's the temperature. Let me put it here. So right now you can see this is the uh, TP-Link Tapo temperature and humidity monitor. So you can see this is a 34.6 degrees Celsius temperature and the 57% humidity. And you can see this is quite high. To manage these networking devices, because all these devices are running 24 by 7, as you can see right now. That is, too much. I'm trying to uh, avoid this because I'm trying to manage. So at some point I was thinking कि मैं अपना रैक ही चेंज कर दूं एंड फुल 42 साइज रैक एक ले लूँ और वापस से सारा मैनेज करूँ एज ए फैन. But I'm thinking I should get some Noctua fans. Let me know in the comments what should I check for uh, managing the heat of my rack. If you guys have any uh, recommendations, you can let me know in the comment, because I've tried to use all the exhaust fan at the top of the rack, and but still I am unable to get manage the heat here. So this is concerning because इसमें मैं UNAS भी run कर रहा हूँ. As you can see, this is a UNAS which has run all hard drive 24, और इसमें Ubiquiti का UNVR and the UniFi switch cloud key, and this is the 45 lab home drive from 45 drives HL4, which I am still preparing. I'm getting some devices, and this is my Dell PowerEdge server, which is quite, it is not getting quite hot also, and it is running very smooth. You can't even hear the sound of the rack. Normal, ideally it give up to like 130 watt and all those. So this is my concern. If you guys have any recommendations, what should I do for this for the heat and the humidity, to manage control that heat and humidity. As you can see right now, the temperature go is going up to 34 and the humidity is 57. So if you have any recommendation, you can let me know. My plan is to get the first these manage easily, and then I will set up the 45 drives HL4 where I will run the UNAS Pro. Sorry, where I will run the TrueNAS, because as of now I am running the TrueNAS on Zima board 832, which is giving me quite issues. So at some point I will be able to change. So let me show you the uh, iDRAC of my Dell server. So most of you have questioned me before, what is the idle value, the power wattage of the Dell R7 420 server. So let me show you. This is the server overview of the Dell PowerEdge R420, and I'm using the enterprise license iDRAC 7. As you can see, I can even
check the console preview from here directly. And even if I want to launch, I can launch with the Windows machine which I have on my uh, desk. So here this is the power thermal. I can show you the present reading and the, I mean the average reading of my server. So right now you can see the present reading, it's 112 watt. So because I am running lots of VM here, let me show you in the Proxmox. So here you can see I am running a lots of VMs like the Greylog, Uptime, Kuma. So I think only the Home Assistant is getting quite a lot of power and everything. So you can check here. This is 112 watt of power reading right now I am running. So you can check the average usage here. So 116, 115, 109 watt. So you can check that. And this server is I mean working well quite. I'm using it from around like 6 months, and so far no such issues to me. Uh, it it is working well. So only point is like I have to get these managing temperature, that, and after that I have to use the HL4. So let me show you the Zima board where I run the TrueNAS. So this is the TrueNAS I'm running on the Zima board. I've already shown because this Zima board internally has this CPU, Intel Celeron R CPU. As you can see, the processor of this, and I'm using a normal hard drive of 1 terabyte. I mean two hard drive of one each. So you can see it gives me the storage of I think, yeah, you can see here 1.76 TB. Out of that 1.23 TB is used, and I'm using image which store all the photos and videos on the cloud without needing of iCloud on the iPhone. So I'm planning to move this TrueNAS to the HL4 whenever it is ready. So I will be doing a video soon on that, and I will show you what else I got on that. Apart from that, I've also won queries and questions with you guys. I have my one Dell. Let me show you one more thing. Let me show you one what I'm doing with my Dell Mini PC Windows app. Okay. So this is the Dell Mini PC I'm using right now. Let me minimize it. So this is the Dell Mini PC right now I am using. Let me show you. Okay, so this is the specs of this Dell Mini PC. Right now you can see it has a 256 GB of SSD storage, and it has a 32 GB of RAM, and internal Intel R graphics card of 128 MB, and it is a processor of Intel R i3. Here this I am running some applications called internal speed test, which I am doing right now here, which is running on the Windows Docker desktop. I am doing liber speed. I can show you. This is I am running here. So I think it's running. I will show you in a moment. So you can check the speed from here. This shows my internal speed to from ISP, as you can check here. It is showing
607 Mbps download and 786 Mbps upload. So this Dell Mini PC comes useful. Even I can check. Oh, sorry. This Dell Mini PC I can show you. If I want to access the this Dell server remotely, I can do with the console preview here. I can just launch it directly from here, and I can access. But I need to be on the Windows desktop to access that, so I can access and uh, let me show you that also. Oh, I'm sorry, I'm using a wrong username and password. Let me double check. Okay, I got it. So right now here you can check that I'm using. Okay, sorry again. 2, 3, 4, 5. So right now I'm accessing this my iDRAC of my Dell server, and from here I can launch the service and I can access the server from here. For example, you have to just click on the launch, and you can virtually you can check your iDRAC or server preview. So I have to just open this download Java file, and I click on continue, and here it will just verify for the application and will wait for its status. So right now it says select the box and click the run to continue. So here you can check here. I can. So right now I'm connected to my Proxmox, as you can see here. So I can access it from here. Uh, Forgot the password. Sorry. So right now I'm logged into my Proxmox and I can access the GUI from here directly. So this Windows PC come very useful. I mean this Windows mini PC. Right now I have one more mini PC on my desktop, and I'm not sure what else should I run. So this Windows PC has the same specs which I am showing you right now here, which is of Intel Core i3 9 generation, and install RAM of 32 GB, and it has a Windows 11 Pro also. So that's my question with you. It is sitting just on my desktop. So, what do you guys think I should run on this Dell Mini PC, or should I give away this also? This PC from the Dell. I mean, this is quite good. I think, as you can see here, I'm not getting any such issues on this Dell Mini PC. It is working as fine, but I have it on my desk. I mean, on one of my mini PCs on the rack, and this is an idle. I'm not using it yet. So I was thinking, what should I run on this mini PC, or should I do the giveaway? Let me know in the comments what you guys want to for me to do. So those who have joined the live right now,
The giveaway winner is announced. I have put that under the chat and I will pin that message so you can check that. And if the giveaway winner is watching this live, you can just reach out to my email address. I will ship you this device as soon as possible. So you guys want to ask anything, or do you need do you want me to show anything like what else do I run on my network? If you guys have any questions, let me know what else do I run. So I've shown you everything right now apart from UniFi network, and this is a UniFi drive, dream machine, and everything on my network. So let me know in the comments. I will wind up this live session because already 1 hour session we have did right now. Okay, guys. So I think there is no more new questions. So thanks everyone for joining this live session, and thanks again for participating in the Edge router giveaway. Uh, and congratulations GOMPI71 for winning this giveaway. I will please reach out to me soon on my email address which is in the description, so I can give away this Edge router access soon. uh, how did you get into this hobby? So basically, yeah, that's a good question. बेसिकली मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है. आई हैव डन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, and after that I have worked in industry like RFID industry. I have done some government projects on that, the government projects of tracking of the vehicles, and after that I've joined with Ubiquity as a support engineer, and then after that I joined Hostify, and right now I'm with the Hostify and doing YouTube. So right now, it was a like for me to run my own lab. It was my dream. Like I have to run all these devices, networking devices, whether it is of Ubiquity, Cisco, PFSense. I have all those devices. So it was my dream to build a rack and set up everything on a rack, uh, all the UniFi devices. And the best thing is like I want to do a self hosting, though that kind of create an hobby on me, so I have to do everything self host. So right now, as you know, everyone is using some kind of subscriptions like Amazon Prime Video, Netflix, सभी यूज़ करते हैं. So अभी मुझे एक चीज़ करना है कि अभी मैं चाहता हूँ कि सारे सब्सक्रिप्शन बंद कर दूँ एंड आई शुड गो ऑन द सेल्फ होस्टिंग, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली. आई थिंक इन इंडिया सेल्फ होस्टिंग इज़ वेरी कॉस्टली बिकॉज स्टोरेज डिवाइस काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे. अगर आप मार्केट में चेक करना चाहेंगे तो इवन रिफर्बिश स्टोरेज डिवाइस रिलायबल ही नहीं है, उनका लाइफ साइकिल कितना है नॉट श्योर. अभी आपके पास वो डिवाइस चल रही है, स्टोरेज डिवाइस नहीं. सो बेसिकली यही एक कंसर्न है कि सेल्फ होस्टिंग पे फुल आ जाऊँ, लाइक यूजिंग जेलीफिन और व्हाट एल्स इज प्लेक्स टू डू ए सेल्फ होस्टिंग. सो ये हॉबी थी. मतलब बेसिकली जब तुम ये चीज़ डेली बेसिस पे करते जाओगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट उस चीज़ में बढ़ता जाएगा, और एट वन पॉइंट यू विल स्टार्ट लविंग दैट. सो यही चीज़ हुआ. आई वॉज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, तो मेरी फील्ड अलग थी RFID, एंड नेटवर्किंग कोर डिफरेंट था. फिर नेटवर्किंग में आने के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट हुआ, और now I have built my office rack, my home rack. So yeah, that that is how I get into this hobby.
So any else, guys? You have any questions? Let me know. Thanks for asking that, Rory. What do you guys say? I should end this live session. Cool. I use Jellyfin to cast stuff from my PC to my TV too. Yeah, nice. Jellyfin is nice. So, as I said, right now I'm planning to do that on my dedicated server. Let me show you. I have a server here. I'm not flexing, but I will show you. Okay, you can see here. I have this Dell server right now, and this server I am going to run uh, Plex or Jellyfin. I'm planning in both of them. Which one should I go with? So this is the Dell R420. Right now I'm using one server on my rack, and this server I will use as my Plex and the Jellyfin. So how can I show you that? So right now I have this. So the Dell R420 has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 base of 2.5 inch. Um, so I'm thinking, planning how much drives I should use that on that, because it's a single form factor 2.5 SFF. So I'm planning to get a SSD or SAS drive on that. Yes, Jellyfin is free and open source, so I prefer. Yes, as compared to the Plex, I would say Jellyfin is now good as compared, and everyone is moving from Jellyfin. So everyone is moving from Plex to Jellyfin right now. So because it's free and open source, I am going to build that soon on this uh, Dell R420 server. I will run Proxmox, and then I will host that. Okay. Anyway, anything else? If you guys want to know, let me know. And what else do you guys want me to give away? Because the as a cloud gateway ultra I'm using, and this UniFi Express. Cool. I am planning to start a home lab using Raspberry Pi. Okay, that's nice. You can go with the Raspberry Pi. I mean, yeah, you can have your mini lab with the Raspberry Pi. I'm using Raspberry Pi 4 4 GB as a Pi hole. I think I can show here. Oh, sorry. Okay. So this is a Raspberry Pi I am running here, as you can see here. So yeah, you can, if you're planning for a home lab, you can start using a Raspberry Pi. That's a good thing to do. So this is the Pi hole dashboard. Uh, you can check here. This is the total queries and queries block, and so yeah, it's a cool device. You can use that. So let me tell you one thing. What happened today? I use the AdBlock service through open on my router itself.
Yeah, you can use ad block. That's also a good service. I mean, mostly everyone use ad block right now through OpenWRT on my router itself. Yeah, that's a good thing. So let me tell you one thing. So uh, before I was preparing this live session, my internet went down. As you can see here, something like it shows the status here, or not sure if it is showing. Yeah, you can check here the logs here. The internet disconnected is June 28. It's 4:46. So yeah, I was preparing for that, and when I went back to my rack, I mean, the ping was going fine. I was running the ping, but my google.com, it was saying unknown. So I thought something happened with the Raspberry Pi. Why it's my DNS stopped working, because I'm running everything on a Pi hole as my DNS server. So when I went ahead and looked at the rack, the pi hole cable was removed from the socket, so the pi hole stopped and everything, internet got stopped. So that's a good troubleshooting came to know also, because the DNS is I mean uh, very useful in your network use case. So you need to make sure the proper DNS and everything. So for that I'm using Uptime Kuma. It gives you the status of everything. So right now you can see this pi hole, uh, the down of the pi hole. As you can see the time here, for the which time being it was went down. You can check here. So yeah, it's come very useful. So I'm using this Uptime Kuma, and this Uptime Kuma I'm using a webhook, and it send me a notification on the Discord server. So I've just created a small server there, so it gives me the notification whenever my Hostify controller is down, any website is down, Proxmox is down, Pi hole DNS port 53 is down. So it gives me an alert on that. So yeah, very cool. Yeah, you should try that if you use Uptime Coma. And one of my friend recommended me this applications which I ran on the Docker, and it's also quite cool. I think you can get access to of your devices. I mean, whichever devices is connected on your network, you can get a list of the devices, and even for example, if you want to manage that devices, you can just give the name, owner of the devices, type of the devices. You can set that, and you can have everything like as in monitoring. You can check the presence of this, what time it was present and what time it was down. You can check the weekly. You can see now online, past online mismatch, so you can get all the status. So you have to fill this everything. I have not done completed these steps, but this is quite cool feature. One of my friend share me net alert X. I'm running on the port inner, as you can see here. uh, so on the port owner, I'm running 5 containers. You can see net alert X and all the agent I'm running here. So it's very nice features. You should try that. So I think I've completed it's 1 hour, I think, for this live session. If you guys are new to my channel, please make sure to subscribe to my channel. That will be really appreciated. uh, if you have any questions, let me know in the comment. You guys have any questions, you just comment down.
Okay, nice. Thank you. Thank you, Rory. Yeah, thank you so much. Thanks for the subscription. Yeah, I mean, okay, I think I should end this live session, and thanks everyone for joining this live session. I hope I will be doing this weekly, and I will announce them on the weekly manner, so all of you guys can join and share your thoughts and everything. It's good to meet you guys on a live, and I mean, most of the thing it's new to me. If you guys have any recommendations, you can just let me know in the comments. Like, you can check out my channel. I can You can give me any recommendations of anything, what else video you guys need. You can just let me know in the comment. You can make sure to subscribe. Right now I've just surpassed 2k, so now I am aiming for 5000 subscribers. So I hope you guys can help me out through to get those subscriptions. And yeah, and I thank each and everyone for joining this and keep supporting me. uh, See you in the next week, and see you in the next video. I will make sure, and I will try to cover all those topic in the doing a NAS also. Like, I'm making my own NAS DIY NAS using the HL4 from 45 drives. So make sure to check that video. I've done a part 1, so you can check that out. And let me know in the comments if you have anything on my YouTube related any stuff. Okay, thanks for joining. See you next time. Bye. Take